Hello my dear students, I welcome you to this class. Today we shall discuss or go through a new topic. Before we go through the new topic, we must have heard a new saying, that is God is always with us, like when you get scared, God is right there to hold your hand. You must have heard this type of proverb or maxim. God is always with us, like when you get scared, God is right there to hold your hand. Such feeling was appeared in the mind of a person like Lencho, a farmer in Mexico. Today, that feeling or that situation prescribed like a subject like a letter to God. So today's topic is a letter to God. A letter to God. A letter to God, written by G.L. Fuentes. A letter to God, G.L. Fuentes. G.L. Fuentes is a Mexican novelist, poet, and a journalist. From the very beginning of his childhood, he started his writings. Most of his writings are connected with tyranny, oppressions of Americans. Most of his stories are thrilling, exciting, and humorous. He was awarded the National Prize of Arts and Science in 1935. And today's prose piece, A Letter to God, it sounds absurd, it sounds strange, it sounds unbelievable to listen to someone a letter to God. People, however, believe that faith can move mountain. The prose piece, A Letter to God, describes about a farmer named Lencho who wrote a letter to God asking for money because his cornfield was totally destroyed by the hailstorm. Such was his self-confidence, strong determination, and unflinching faith in God. So he wrote a letter to God. Now we see how the story progresses. If we go through the topic, we know how he showed his feeling, how he showed his love, how he showed his devotion to God. Let us start our prose piece, A Letter to God, G.L. Fuentes. Look at the book. A Letter to God, written by G.L. Fuentes. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one would see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. From the very beginning, I have told you that
प्रथम मु कही दिस स्टोरी deals with the hard life. This story deals with the hard life and complete faith in God of a poor farmer named Lencho who wrote a letter to God asking for some money because his cornfield was totally destroyed in the hailstorm. This story deals with the hard life and complete faith in God of a poor farmer named Lencho, who wrote a letter to God asking for some money because his cornfield was totally destroyed by the hailstorm. Now you see your book. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. First of all, we see the situation or the location of Lencho's house. Where was the Lencho's house? Now, the Lencho's house sat on the crest of a low hill, the only house in the entire valley. That means Lencho's house, there was only house in the entire valley on the crest of a low hill, on the top of a low hill. Where was Lencho's house? Lencho's house was on the crest of a low hill. That means a crest. That means a crest. Crest means crest. Crest, topmost, zenith or pinnacle. शीर्षतम स्थान, शीर्षतम crest, that means a topmost, zenith or pinnacle, शीर्ष स्थान of a low hill. The only house, there was the only house on the topmost or top part of a mountain. That house belonged to Lencho. से घरटी कहार घर थिला ना लेंचोर घर थिला. The house, the only one in the entire valley. Entire means complete. Entire, that means a whole, complete. Then valley, a low area of land between
between mountains or hills. That means उपत्यका. उपत्यका संपूर्ण उपत्यकार केवल गोटी मात्र घर थिला एवं से घरटी गोटे छोट पहाड़र शीर्ष प्रदेश अवस्थित थिला. संपूर्ण उपत्यकार थिबा गोटे घर जहाँकि पर्वतर शीर्ष प्रदेश थिला एवं दैट हाउस बिलोंग टू लेंचो एवं से घरटी काहार नथिला आउ काहार नथिला से घरटी लेंचोर थिला. एवं आउ कोन थिला From this height one would see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. From this height, from this point, one would see the river. There was a river and the low part of the hill. पहाड़र पार्श्व दे पहाड़र निम्न प्रदेश रे गोटे नदी प्रवाहित हो जाउथिला एवं one could see the river easily from this point or from this house or from this height. से उच्चतारे बा से निम्न शीर्ष प्रदेश रे थाई जणे सहजरे तळे प्रवाहित होथिबा नदी को सहजरे देखि पारुथिला. And what other things did he see or she see? तेणु से आउ को जिन देखिपर से उच्चतार रही ना. द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स. द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स स्कैटर्ड ओवर द फ्लावर्स डॉटेड विथ दैट मीन्स स्कैटर ओवर एणे तेणे विक्षिप्त एणे तेणे डॉट विथ स्कैटर विथ और स्कैटर ओवर एणे तेणे कि देयर वाज ए फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, देयर वाज ए रिवर एंड वन कुड सी द रिवर वेरी इजीली and the ripe corn very easily from this height or from this house, the only house, from this lonely house. से निर्जन घर से एकुटिया घरे थाई जड़े पहाड़ तले प्रवाहित होता नदी एवं पहाड़ तले थिबा विस्तीर्ण कि पाचिला शस्य क्षेत्र को जड़े देखि पारुथिला. आउ कौन देखि पारुथिला? देन डॉटेड विथ फ्लावर्स एंड द trees beard with flowers that could also be seen from this point or from this height. से पर्वतर शीर्ष रही जड़े से किए विभिन्न गछरे फुटी फूल को मध्य सुंदर भाव जन देखि पारुथिला. एवं दैट कॉर्नफील्ड ऑलवेज प्रोमिज्ड ए गुड हार्वेस्ट. प्रोमिज्ड दैट मीन्स offered. That means appeared to give. Appeared to give प्रतिश्रुति देउथिला. Promised a good harvest. Good harvest that means a good yield. उत्तम अमल ए गुड हार्वेस्ट एक उत्तम अमल प्रतिश्रुति बहन कर पाचिला शस्य क्षेत्र एवं विक्षिप्त भाव एणे तेणे फूल फुटी गछ एवं तले प्रवाहित नदी को जड़े से घर भितर रही सहजरे देखि पारुथिला. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. The only thing केवल the earth needed only a downpour. A heavy
fall of rain, ବୃଷ୍ଟିପାତ। A downpour, a heavy fall of rain, ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଏକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦରକାର କରୁଥିଲା। The earth needed, badly needed a heavy fall of rain, or at least that means minimum, at least minimum a shower drizzle, shower means drizzle, that means असराय वर्षा बा झिपी झिपी वर्षा। The earth needed a drizzle or a downpour for better crops, for better yielding, उत्तम अमल पाए माटीमा पृथ्वी असराय वर्षा कि एक वृष्टिपात दरकार करुथिला। Then what did Lencho do? Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast, এবং throughout the morning, ସକାଳ ସାରା संपूर्ण सारा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड सकाळ सारा सकाळ तमाम लेंचो हाड डन नथिंग एल्स लेंचो किसी काम कला नाही ओनली ही सॉ द नॉर्थ ईस्ट स्काई फॉर होपिंग ए डाउनफॉर और होपिंग ए शोर वर्षा पाई उत्तर पूर्व आकाश को केवल लेंचो लगी चाहि रहिला कौन पाए ना फॉर सम रेन फॉर सम वाटर because it is badly needed for his field dotted with flowers एवं कारण तार बिल पाई तार शस्य पाई किछि वर्षा दरकार हेउथिला सेथि पाई से उत्तर पूर्व दिग को सकाळ सारा चाहि रहिला he had done nothing else से किछि काम कला नाही only he saw the north east sky because of rain का वर्षा पाया पाई से उत्तर पूर्व दिग को चाहि रहिला। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, intimate, close, intimately, closely, घनिष्ठ भावरे that means in a private and a personal way, in a private and personal way, intimately that means closely, intimately that means closely, घनिष्ठ भावरे अति निकटरे भल भावरे that means in a private and personal way, like व्यक्तिगत भावरे से तार बिल को भल भाव जानी थिला जे तार को बिल पाई केते जल दरकार केते जलर आवश्यकता रही से संपूर्ण भाव जानी थिला। सो ही हैड डन नथिंग एल्स इन द मॉर्निंग थ्रूआउट द मॉर्निंग ओनली ही सॉ द नॉर्थ ईस्ट स्काई उत्तर पूर्व दिग को से केवल उत्तर पूर्व आकाशर दिग को केवल से चाहि रहिला फॉर ए रेन फॉर सम वाटर किछि पानी पाई किछि जल पाई किछि वर्षा पाई से केवल चाहि रहिला। Then what happened then? Now
we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for children. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives. Now we see, now we are really going to get some water, woman. Who said this? Lencho said his wife. Lencho said his wife that they were going to get some water. Lencho तार स्त्री को कि कहले जे आज आमे किछि वर्षा पाइबा किछि जल पाइबा because काहेकि he was able to see or he could see the clouds of mountains in the northeast sky. उत्तर पूर्व दिगर आकाश को से देखिला एवं जानिले जे मेघबादल गुड़िक आकाश रे देखा गलानी. So he told his wife that they were really going to get some water. तेणु से माने आज किछि वर्षा पाइबे जल पाइबे बोली तार स्त्री को कहिले. What did his wife reply? The woman who was preparing supper at the time, while the Lencho told his wife that they were going to get some water, at that time the woman or Lencho's wife was preparing supper. That means supper. And every day we eat 6 times. First one is breakfast. Then brunch, then lunch, then snacks, then supper, then dinner. Every day प्रत्येक दिन आमे दिन को 6 थर खाती जनरली. ता फर्स्ट वन इज ब्रेकफास्ट जलखिया जलपान बा जलखिया. देन ब्रंच 10टा बेले. खाउथिबा मील मध्याह्न भोजन स्नैक्स अपराह्न रे खाउथिबा शुष्क खाद्य सपर संध्या भोजन रात्रि भोजन. आमे साधारणतः दिन को 6 थर खाई थांती. एवं फर्स्ट वन इज ब्रेकफास्ट जलपान बा जलखिया माने कि विदिन 7 AM व्हाट एवर वी ईट दैट इज ब्रेकफास्ट. देन ब्रंच 10टा बेले आमे खाई जते बेले विद्यालय को जाती. विद्यालय जावा पूर्व आमे गाधोई सारा पर जो मील खाती दैट इज कॉल्ड ब्रंच. एवं मध्याह्न समय गोटे 2टा बेलू जो खाद्य आम खाती ताकू बा मील खाती से आम कहती लंच. एंड अपराह्न समय 4टा बेले स्कूल फेरती तापर आम किसी शुष्क बिस्किट हो बा अलग किसी प्रकार किसी शुष्क खाद्य खाती ताकू आम स्नैक्स बोली कही था. एवं संध्या समय जेटा आम कि स्कूल समय सारापर स्नैक्स कर सारापर खेल पड़ा जाती खेलती और संध्यारे फेरती. फेरला हाथ गोड़ धोई
प्रथमे आम कि हालुका खाद्य लाइट मील खाती पढ़ा पूर्वर दैट इज कॉल्ड सपर देन राति 9टा 10टा बेले जो खाद्य आम खाती दैट इज कॉल्ड डिनर दीज आर द कि फूड मेन्यू ऑफ एवरीडे लाइफ दैनंदिन जीवन आमर खाद्य खाइबार जो मेन्यू बा टाइम टेबल यहाँ हूँ ब्रेकफास्ट ब्रंच लंच स्नैक्स सपर डिनर द वुमेन और लेंचोस वाइफ वाज प्रिपेयरिंग सपर से संध्या भोजन प्रस्तुत करुले सी वाज मेकिंग सपर से संध्या भोजन प्रस्तुत करुले while Lencho told his wife that they were going to get some water or get some rain वर्षा जेते से लेंचो तार स्त्री को कहले आमे किछि वर्षा पाइबा बा किछि जल पाइबा सेते बेले लेंचोर स्त्री संध्या भोजन प्रस्तुत करुथिले एंड व्हाट डिड शी रिप्लाइड yes God willing yes God willing yes God willing yes God willing she told his husband or she told Lencho God willing that means by the grace of God or if God wishes yes God willing that means by the grace of God भगवान कर आशीर्वाद हेले भगवान जदि चाहती if God wishes we can get water we can get rain his wife told लेंचोर स्त्री लेंचो कहले जदि आम हाथ में वर्षा नहे आम हाथ में वर्षा कथा आम सीना अनुमान करुँच आम हाथ में से वर्षा ना एवं ये हूँ भगवान का आशीर्वाद तेणु फ्रॉम दिस पॉइंट वी केम टू नो दैट आम यही पॉइंट आम जाना पाँच हाउ डीप फेथ लेंचो एंड हिज वाइफ टुवार्ड्स गॉड भगवान प्रति लेंचो एवं तार स्त्रीर केते गभीर विश्वास रही यही पॉइंट रू आम जानवा पाँच बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इफ गॉड विशेष भगवान चाहिए वर्षा हेब भगवान चाहिए वर्षा हेब नाही तेणु भगवान उपरे तांकर अतुट विश्वास रही दे हाव अनफ्लिचिंग फेथ इन गॉड अतुट विश्वास रही डीप फेथ इन गॉड कंप्लीट फेथ इन गॉड भगवान ऊपर तांकर संपूर्ण विश्वास रही भगवान ऊपर तांकर अतुट विश्वास रही बोथ कपुल उभय स्वामी एवं स्त्री उभय लेंचो एवं तार स्त्रीर यही प्रकार भगवान विश्वासी से अटंती देन व्हाट हैपेंड देन द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while Lencho's wife was preparing supper at the time his older boys were working in the field सेते बेले लेंचोर बड़ पिला माने older boys लेंचोर बड़ पिला माने what we are doing they were working in the field they were working older boys were working in the field older boys were working in the field while the younger ones were playing outside older boys were working in the field लेंचोर बड़ पिला माने तांकर बिलरे काम करुथिले व्हाइल सेते बेले द यंगर वान्स लेंचोर सान पिला माने छोट छोट पिला माने वी आर प्लेइंग आउटसाइड घर बाहर खेलुथिले लेंचोस वाइफ वाज प्रिपेयरिंग सपर हिज ओल्डर बॉयज वी आर वर्किंग इन द फील्ड एंड हिज यंगर बॉयज वी आर प्लेइंग आउटसाइड छोट पिला माने बाहर खेलुथिले near the house until the woman called to them all come for dinner until not till until that means not till जे पर्यंत नुहे
जे पर्यंत लेंचर स्त्री तार पिलामानंकु खाइबाकु डाकी नाहंती, डिनर पाई डाकी नाहंती, रात्रि भोजन पाई डाकी नाहंती, सेतेबेले पर्यंत बड़ पिला माने बिलरे काम करुथिले एवं छोट पिला माने घर पाखरे घर बाहरे खेलुथिले। देन इट वाज ड्यूरिंग द मील, दैट मीन्स लेंचोस वाइफ व्हेन एवर डार्क केम, जेतेबेले अंधार माड़ी आसिला, जेतेबेले रात्रि आसिला, लेंचोस वाइफ कॉल्ड हिज ओल्डर बॉयज एंड यंगर बॉयज फॉर डिनर, एवं माँ पुओ मानकु बा तंकर पिला मानकु रात्रि भोजन पाई डाकिले। एंड एट द टाइम ऑफ मील ऑफ देयर मील, जेतेबेले उभय लेंचो एवं तांकर पिला माने देखिए टेकिंग देयर मील, जेतेबेले खाउथिले। इट वाज ड्यूरिंग द मील, जेतेबेले लेंचो एवं तार पिला माने एकत्र बसी खाउथिले। व्हेन एवर लेंचो एंड हिज चिल्ड्रेन were taking their meal, taking their dinner, just as at that time Lencho had predicted, as Lencho, just as Lencho, as jepori Lencho had predicted, what Lencho had predicted in the morning, Lencho jaha sakale अनुमान करिथिला, predict, that means guess, अनुमान करिबा, predict, foretell, अनुमान करिबा, भविष्यत को अनुमान करी कहिबा, that is means guess, what had लेंचो predicted, लेंचो जहा अनुमान करिथिला। big drops of rain began to fall, ताहा जे कि सत्य रे परिणत हैला, that materialized, ता वास्तव रे परिणत हैला, that fulfilled his ड्रीम, दैट फुलफिल हिज प्रेडिक्शन, लेंचर प्रेडिक्शन वर्तमान कि पूर्ण होगा जाऊँगी। कारण कि व्हाइल दे वर टेकिंग देयर मील एट दैट टाइम व्हाट एवर लेंचो प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगान टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बड़ बड़ वर्षा बिंदु पड़वा को आरंभ कला। दैट मीन्स ए रेन बिगान टू फॉल, वर्षा आरंभ हो गला केतेबेले, whenever Lencho and his children were taking their dinner. Then in the northeast huge mountains of clouds, आउ मध्य लेंचो देखिला उत्तर पूर्व दिग को से सकाळ सारा चाहि रहिथिला, जेतेबेले से खाई बसची तार रात्रि भोजन करूची, एई समय से देखिबा पाइला जे उत्तर पूर्व आकाश रे ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज विशाल, लार्ज, ह्यूज लार्ज, बिग, बड़ बड़ मेघबादल, पहाड़ भलिया बड़ बड़ मेघबादल देखि कुड बी सीन अप्रोचिंग, माड़ी आसीबा, अप्रोच निकटवर्ती हेबा, अप्रोच निकटवर्ती हेबा, अप्रोच कम नियरर, अप्रोच कम नियर, माड़ी आसीबा, वर्ती हेबा, निकटवर्ती हेबा, अप्रोच कम नियर, माड़ी आसीबा, निकटवर्ती हेबा। लेंचो कुड सी बिग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़ बड़ मेघबादल भासी आसुथिबार लेंचो देखिबा पाइला। लेंचो कुड सी बिग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन टुवर्ड्स हिम, ता आड़कू, तार घर आड़कू, तार अंचल आड़कू बड़ बड़ मेघबादल भासी आसुथिबार लेंचो देखिबा पाइला। व्हाट वाज हिज फीलिंग? Then in the northeast huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. वायुमंडल बा पवन वर्षा पूर्वर आम साधारणतः जानी वर्षा पूर्वर पवन प्रवाहित हुए एवं से पवन से पवन प्रवाहित है जो मेघबादल भासी आसूला उत्तर पूर्व आकाशरू लेंचो देखा पाइला। यही समय पवन बहुत सतेज थिला एवं कि
मन मनलोभा थिला एवं मन को आनंद देउथिला भलिया पवन प्रवाहित हैला। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो कुड नॉट टेक हिज मील। लेंचो आउ खाई पारला नाही, बसी पारला नाही बाय द साइड ऑफ हिज मील पाखरे बा खाइबा पाखरे से लेंचो बसी पारला नाही। काहींकि he was a keen interested for some rain। कारण से वर्षा पाई बहुत आग्रही, वर्षा पाई बहुत इच्छुक, तेणु से खाइबा कंसारे आउ बसी पारला नाही। से खाइबा ठारू उठी आसिला। द मैन वेंट आउट, बाहर को चली आसिला। गो आउट रो पास्ट टेंस हला वेंट आउट, गो आउट तार पास्ट टेंस हला वेंट आउट। लेंचो वेंट आउट लिविंग हिज मील, तार खाइबा कंसा को से उठी आसिला बा खाइबा ठारू उठी आसिला। देयर वाज नो अदर रीजन, आउ कौन सी कारण नथिला ध्यान टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। केवल तार कारण कहीं से लेंचो लिव फॉर हिज मील, लिव फॉर हिज डिनर, तार कि लेंचो कहीं तार मध्याह्न भोजन रात्रि भोजन कहीं उठी आसिला ना टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। कारण अनेक दिन हेलाणी ता देहरे तार शरीर रे वर्षार स्पर्शता बाजी नाही। तेणु वर्षार स्पर्श पाइबापी वर्षा बिंदु ता देहरे पड़िले से आनंद अनुभव करिवो। टू हैव द प्लेजर, प्लेजर माने खुशी, आनंद, प्लेजर। टू हैव द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। प्लेजर खुशी, आनंद। आनंद वर्षार शिहरण ता देहरे बाजिबो, सेही सकाशे से खाइबा ठारू उठी आसिला, रात्रि भोजन ठारू उठी आसिला। एंड व्हेन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेम्ड, एवं बाहर को चली आसिला, वर्षा बिंदुरे टिके भिजिगला, से आनंद अनुभव कला। एवं टिके वर्षा बिंदुरे भिजिगला परे से तेरे घर भीतर को पुणी प्रत्यावर्तन करे। ही एक्सक्लेम्ड, से आश्चर्य हो गला। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम सरप्राइज, सरप्राइज आश्चर्य, चकित। एक्सक्लेम आश्चर्य बा चकित हेबा। से आश्चर्य हो गला, चकित हो गला। टू सी द रेनड्रॉप्स, वर्षा बिंदु को देखी से आश्चर्य हो गला, चकित हो गला। एवं व्हाट फीलिंग्स डिड ही पोजेस्ट, ता मन की प्रकार धारणा की प्रकार भावना सृष्टि हैला। दिज आर नॉट रेनड्रॉप्स, से मने मने ही थॉट हिमसेल्फ दिज आर नॉट रेनड्रॉप्स, यही गुड़ाक वर्षा बिंदु नुहंती। दिज आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश रो जो वर्षा बिंदु खसी पड़ुची। लेंचो कन्सिडर्ड दैट दे आर नॉट रेनड्रॉप्स, से गुड़ाक वर्षा बिंदु प्रकृति नथिला बोली से विवेचना कला। व्हाट डिड ही कन्सिडर दिज रेनड्रॉप्स, ए वर्षा बिंदु को से कौन बोल अभिहित कला। दे आर न्यू कॉइन्स, से गुड़ाक नुआ मुद्रा बोली से अभिहित कला। ही considered the raindrops as new coins। से वर्षा बिंदु को लेकिन वर्षा बिंदु बोली कहला नहीं, अभिहित कला नहीं, विवेचना कला नहीं। से कौन कले ना ही कन्सिडर द रेनड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स, ताकू लगिला से अनुभव कला एगुड़ाक वर्षा बिंदु नुहे, एगुड़ाक से चिंता कला जे एगुड़ाक हूँ गोटे गोटे नुआ मुद्रा सते जे भली आकाश मार्गरू खसी पड़ुअछि। तेणु कहीं से ए वर्षा बिंदु को नुआ कॉइन बोले, न्यू कॉइन बोले अभिहित कला। व्हाई डिड ही कन्सिडर द रेनड्रॉप्स एज न्यू कॉइन्स,
because the earth needed the earth badly needed some water to get good harvest. कारण तार बिल किछि जल दरकार करूथिला, किछि पानी दरकार करूथिला एवं से उत्तम अमल पाया पाई। तेणु उत्तम अमलर ये होछि गोटे माध्यम होइथिबारु तेणु रेनड्रप्स गुड़ी को से न्यू कॉइन बोली अभिहित कला। एवं एंड व्हाट अदर आइटम्स डिड ही कंसीडर, आउ से कदा कौन अभिहित कला? द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ बड़ वर्षा बिंदु गुड़ी को से 10 सेंट पीसेस बोली अभिहित कला। 10 सेंट पीसेस, सेंट है गोटे टंकार एकक एवं पीसेस, एंड लिटिल वन्स आर 5 एवं छोट छोट वर्षा बिंदु को से 5 मुद्रा बोली अभिहित कला एवं बड़ बड़ वर्षा बिंदु को से 10 पैसा बा 10 मुद्रा बोली अभिहित कला। बिकॉज दिस इज द रेनड्रॉप्स आर द सोर्सेस ऑफ हिज गुड हार्वेस्ट। कारण ये वर्षा बिंदु गुड़िक होउची लेंच पाई गोटे गोटे रुपेली मुद्रा बा नुआ मुद्रा बोली से अभिहित कला। कहीं वर्षा हैला परे से उत्तम अमल पाइब। ही होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट, से उत्तम अमल पाइबार जो आशा करिथिला ताहा दैट इज गोइंग टू मटेरियलाइज, वर्तमान से ताहा पूरण होगा जाउची। सो ही वाज ओवरवेल्म, सो ही वाज वेरी हैप्पी टू सी द रेनड्रॉप्स। तेणु से वर्षा बिंदु को देखी, वर्षा को देखी बहुत खुशी हो गला। तेणु माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड मच मोर। एवं पिला माने तुम निश्चित रूपे ए जो पैराग्राफ दुईटी पैराग्राफ आज पढ़िले एथर तुम निश्चित भाव में निश्चित बुझीपारि एवं जदि किसी असुविधा अच्छे ताहले आम मते ये व्हाट्सअप रे एवं कि निजर प्रॉब्लम को लिखि मो पाखु पठाइबे एवं आई एम रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। मो तुमर समस्या को समाधान करने रही। तेणु तुम समस्ते ये निजर प्रॉब्लम निजर डिफिकल्टीज को एटा कि व्हाट्सअप रे लिखि जणाइबे एवं समस्त सक्रिय अंशग्रहण कर योर active participation, for your active participation. I welcome you to this class and also thank you, and I announce the class is over.